बघा लाईन केवढी आहे. एंड कुठे आहे हिचा? अरे बापरे, 1 तास तर लाईन मध्येच उभं राहायला जाणार. आतमध्ये कधी जाणार, बघणार कधी? आम्ही स्लॉट बुकिंग केल्यामुळे आम्हाला लवकर सोडलं आतमध्ये. इथे काही फूड स्टॉल आहे. आधी थोडंसं खाऊन घेतो, पण पुढे सुद्धा लाईन आहे. संपली. काय पब्लिक ऐकत नाही त्यांना. टी शर्ट टी शर्ट काय बोला? 300 नहीं 300 नहीं है, पागल है क्या? 300 कैसे होंगे? अरे बहुत है बाहर, उससे ज़्यादा है. ये बाहर तो अभी लेंगे नहीं वाले. हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं कविताच रेसिपी ब्लॉगिंग अँड इन्फॉर्मेशनमध्ये. तर आम्ही जे इस्रोचं एक्झिबिशन लागले ना व्हिजिट या कॉलेजला, ते बघण्यासाठी आलेलो आहोत. फ्रायडे, सॅटर्डे आणि संडे हे एक्झिबिशन असणार आहे. आणि आम्ही म्हणजे रजिस्ट्रेशन पण केलं होतं, त्याचबरोबर स्लॉटसुद्धा बुक केलं होतं. तरी पण एवढी रश आहे ना इथे, ऑन स्पॉटसुद्धा बुकिंग केलेलं आहे ह्या लोकांनी. आणि खूप जास्त रश झालेली आहे. ऑलमोस्ट 1 तासाच्या वर म्हणजे 1.5 तास होत आला आम्ही लाईनमध्ये उभा आहे. अजून तरी जे एक्झिबिशन ज्या ग्राउंडमध्ये त्या ग्राउंडमध्ये आमची एंट्री झालेली नाही आहे. तर बघूया आता अजून किती वेळ लागतो आहे. तर तुम्हाला गर्दी बघा अजूनही इथे. मला वाटतं ही लास्ट लाईन असावी. ह्या साईडने लाईन येते आणि पुन्हा एक लाईन होते. एक स्लॉट सोडत आहेत. पुढचा दिला तर मागचा काही लोकांचा म्हणजे 30-40 लोकांना स्लॉट सोडत आहेत. खूप वेळ झाला आम्ही सुद्धा लाईनमध्ये उभा आहोत. भरपूर गर्दी झालेली आहे इथे. व्हॉलंटिअर्सशी बोलले तेव्हा असं समजलं की म्हणजे कालच जवळजवळ 40,000पर्यंत बुकिंग झाल्या होत्या आणि आजसुद्धा काही रजिस्ट्रेशन झालेले आहेत. त्यांनाही अंदाज नाही आहे एक्झॅक्ट काय आकडा आहे तो. आणि खूप गर्दी आहे बाहेर. तर मला वाटतं बरीच लोकांना आता परत जावं लागेल. अगदी सकाळी 9 वाजल्यापासून एक्झिबिशन सुरू आहे. वेगवेगळ्या शाळेची मुलं आलेली आहेत, परत पॅरेंट्सबरोबर मुलं त्यांची पर्सनलीसुद्धा आलेली आहेत. खूप गर्दी आहे. आम्ही जवळजवळ 1.5 तासापासून इथे उभा आहोत लाईनमध्ये. ॲक्च्युली रिस्पॉन्स खूप छान आहे विद्यार्थ्यांचा आणि पॅरेंट्सचा सुद्धा ह्या एक्झिबिशनसाठी. तर फक्त फ्रायडे, सॅटर्डे आणि संडेचं एक्झिबिशन ठेवलेलं आहे. तर मला वाटतं 1 महिनाभर तरी ठेवायला पाहिजे पब्लिकचा रिस्पॉन्स बघून. म्हणजे कसं व्यवस्थित मॅनेज करता येईल आणि सगळ्या लोकांना छान बघता आलं असतं एक्झिबिशन. बघूया आता आमचा नंबर कधी लागतो आहे. हा कोणाला कन्फ्युजन होईल. फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे मी म्हटली हा एक्झिबिशन म्हणजेच फेब, फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे. फेबचा 24, 25 आणि 26ला एक्झिबिशन असणार आहे. आता हा व्हिडिओ तर प्रयत्न करेल मी लवकरात लवकर पोस्ट करायचा, कारण की आम्ही आता घरी किती वाजता जातो आहे. शक्यतो मंडेला माझा प्लॅन होता, पण तोपर्यंत एक्झिबिशन संपतं आहे. जमलं तर उद्या हा पोस्ट करण्याचा मी प्रयत्न करेल हा व्हिडिओ. काय वाइंड अप केलं वाटतं बरेच. काय भेटणार आपल्याला बघा. हे पण वाइंड अप केलं हा स्टॉल पण.
हा पण केला आपण इकडे पण करू. प्लीज कीप मूविंग स्ट्रेट. काय बंद सगळं तेच सांगायला बंद केलं म्हणून लोकांनी ओके सब लोग इधर ध्यान दो अभी. सारे जो सैटेलाइट्स इधर रखे हुए हैं ये सारे इसरो ने स्पेस में लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है. तो ये सबके मिनिएचर मॉडल्स अभी रखे हुए हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस है. तो मैं पता रहता हूँ क्या कौन सा सैटेलाइट क्या करता है. सो दिस इज फर्स्ट रिसोर्स सैट. तो ये करता है कि हमें जो माइनिंग्स वगैरह करनी रहती है तो मिनरल्स कहाँ पर है ये उसका पता लगा सकता है. सो दिस वन इज ओशन सैट. इससे हम लोग क्या करते हैं, ओशंस के टेम्परेचर्स, टाइड्स एंड करंट्स लाइक उसका स्टडी कर सकते हैं, मेजरमेंट्स कर सकते हैं उससे. एंड दिस थर्ड वन इज द GSAT-1-2. ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है. मतलब होता क्या है कि ये इक्वेटर पे घूमता है और इससे हम लोग कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशंस कर पाते हैं, लाइक गूगल मैप्स वगैरह. उसके लिए हम लोग यही सैटेलाइट यूज़ करते हैं मोस्टली. एंड दिस इज़ द रीसैट सैटेलाइट. इसका स्पेशलाइजेशन ये है कि ये क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर सकता है एक्चुअली. तो हम लोग क्लाउड्स को पेनिट्रेट करके उसके अंदर का भी मतलब क्या चल रहा है ग्राउंड पे हम लोग देख सकते हैं. इट्स लाइक दैट. एंड इट्स ऑल्सो यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग ऑल्सो. एंड दिस वन इज कार्टोसैट. इससे हम लोग इमेजेस निकाल पाते हैं, लाइक सैटेलाइट इमेजिंग हम लोग करते हैं ना, लाइक सैटेलाइट इमेज लेते हैं हम लोग, तो वो ये काम कर सकता है. इट्स जस्ट लाइक दैट. एंड उधर 2 मिनिएचर मॉडल्स भी रखे हुए हैं, वो सेम सिमिलर इन लोग जैसे ही है, उनका थोड़ा सा साइज छोटा सा है. एंड दिस इज द PSLV लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये एक्चुअली ये सारे जो सैटेलाइट्स हैं इनको स्पेस के ऑर्बिट में डालता है. उसका काम ये PSLV करता है. उसका मॉडल उधर एक रखा हुआ है, तुम लोग बाद में देख सकते हो. त्याच्या पार्ट असतो त्याच्यामध्ये. चला चलो आगे चलो. सुबह से दादा जाना इथं पुढे. चलो बेटा आगे. चलो चलो पॉसिबल नहीं मैडम. चीज़ों को समझो ना बेटा. हे असं इथं ट्रस्ट करते, हे चेक करतो आम्ही. याच्या आतमध्ये असेंब्ली असते, चारी साईडला लावलं वर खाली. प्रेशर दिला ना ते मग पोझिशन घेतं. प्रत्येक सॅटेलाईटला असतं ते. रॉबर्ट पण आहे त्या स्क्रीनवर. थोडं बेटा पीछे हो ना. एक के पीछे एक आ जाइए. ये हो गया आपका. हाँ आपका वो हो गया. इधर आ जाइए. आप आगे जाइए, उधर एक्सप्लेन होगा. अभी सारे एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके. डिफरेंट फंक्शन है एवरी सैटेलाइट, ठीक है. तो ये रिसोर्स SAT-2 है. इसका फंक्शन Listen on, this is the model of smart space robot. This already implemented in the satellite. Suppose if any case satellite का fuel खत्म होने को आ रहा है और satellite का कुछ part अच्छे से work नहीं कर रहा है, this robot come out of the satellite and detect that part और refuel करता है satellite को. These are the arms of the robot which are used to detect that part. These are the sensors. This is the camera for vision. लॉन्च व्हीकल.
Here we have different kinds of sensor. One is navigator, one is sensing unit, one is accelerator, and one is gyroscope. A satellite revolves around any orbit or planet in a certain direction and altitude. So if anything happens and it changes its direction and altitude, gyroscope detects its exact location and the changes in its direction and altitude. Then it transmits information and stabilizes the satellite again. Here we have prototype of Chandrayaan-1. It was the first satellite launched by ISRO in 2008. It was the Indian satellite which discovered water on the moon. These are research satellites. They are mainly used for weather forecast. तो डेली का कितना टेम्परेचर हो सकता है वो सब हम इसके थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली वी कैन यूज दिस फॉर टाइड डेटा प्रेडिक्शन. हाई टाइड कब आएगी, लो टाइड कब आएगी, ये भी हम इन सैटेलाइट के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ये है कम्युनिकेशन सैटेलाइट. दिस मेनली यूज फॉर अर्थ वाइड कम्युनिकेशन. These are the parts of humanoid robot. Humanoid मतलब ह्यूमन जैसा रोबोट. तो ऐसा कुछ बनेगा. वो सारे पार्ट्स को इकट्ठा करने के बाद इसमें सेंसर्स वगैरह सब लगे होंगे और इस रोबोट को गगनयान करके मिशन है उसके साथ स्पेस में लॉन्च करेंगे. वो हमें स्पेस से बताएगा कि वहाँ की कंडीशन ह्यूमंस के लिए सर्वाइवेबल है या नहीं. अगर वो सक्सेसफुल होता है तो बाद में ह्यूमंस के लिए भी सेम चीज करने का सोचेंगे. और ये है मंगलयान या मार्स ऑर्बिटल मिशन का छोटा मॉडल. उसमें जो सैटेलाइट हुआ था उसका छोटा मॉडल. एक्चुअल सैटेलाइट इससे 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा था. ये उसका सिर्फ छोटा मॉडल है. थैंक यू सो मच गाइस. So, which standard are you guys? 9. So you know the force of gravity. Then you can have a mass, right? There is a force of attraction. So why are you not attracted? That's agree. So if there is a two positive charge and one is a negative charge, so two positive charge can attract and can repel, and the positive negative charge cannot attract. Is it the way? No. Basically, there is a force of attraction between you, but your mass and the force of attraction is strength is very small. That's why you can't feel it. Right? So likewise, this is a mass and I'm shaking it. So basically, this is producing a wave. This is totally different wave, new kind, which was proposed by the Einstein in 1950 by theoretically, and no one believed him. After 100 years, in 2015, there was a first detection of the gravitational wave. But this gravitational wave you can't see, you can't feel, even though detector is there any kind that can measure such strength. Right? So we are looking for the more strength in the gravitational wave. So where it can be coming from? It can come from the merger of the two black holes. Black holes are the massive object. Yes. Neutron stars are the massive object. So they can collide and produce a huge disturbance. That huge disturbance can be travel through the space, which is with the speed of light, not more than that. With speed of light, this and then passing through this detector. Then there is some changes in the detector that we claim we detected something which is a gravitational wave, right? So the question is, it is traveling with the speed of light, right? So we detecting something today. Is it happening today? That collision is happening today? No, because due to the speed limit, it is happening billions and billions years, right? So now the question is, why we are looking for such huge merger? What we will get? So do you guys know where the gold coming from? I am not talking about the mind. I am talking about by which process it is made. Like the sun can make the fusion of the hydrogen can make helium, right? Yes. But where the gold is coming, there is no any process in the solar system that can produce a gold, right? So this merger event, they can provide very high energy to produce such heavy metals like gold, platinum, and etc. Right? So that's it. So are they used to make a natural mineral? Like No. gold? So no, we are not using that. This is a process we are studying. So basically, we are detecting just gravitational wave. After detection, we can have a localization at which direction it is coming. Then we will trigger all the telescope, all the satellite to look in that direction. So we will have the detection in gravitational wave. We will have the detection in the gamma, X-ray, optical, radio. In all band we can cover. In all band we are seeing that explosion.
and using that we can find the properties of that explosion. We can even find the mass of the star, distance at which it is colliding, etc. All these things. And this is a very high technology. So basically this arm is a 4 kilometer and we have to control the laser for the 4 kilometer. It is very difficult. It is highly technical things. Let me show you video first. This is our mini humanoid robot. It can dance, do push-ups, yoga. So these are the projects that have been built by the students of 14. It's a line for a wall. It follows a specific line, black or either white line or either black line. It has some sensors. So these are the sensors which detect the line, and also it passes the information to the microcontroller, and then this control drives the yeah. Like similar to the back. This is a robot. Similar to network. You can see. And this is a mobile control. So you can control using a mobile phone by Bluetooth module. And then this is a mini version of the human. You can dance. You can dance? Push up. We use a Bluetooth module. Yeah. This is extra that we have used. त्याला कपडे घातले टी शर्ट घातले Yeah, programming language that we use is a Python or either Embedded. So it can do all these activities. Basically, we have made this robot for school students so that they can be motivated by seeing this. We provide courses, robotics courses for school students, Python, artificial intelligence, C++. All these courses are there. So from grade 1 to 12, even college students can do it. If someone is from college, we also provide some courses for them. So this is for school students. From basics of electronics till AI coding, all the parts will be covered inside this course. So each level is of 16 hours. It is a nuclear power plant. We use nuclear energy to get electricity also. इसमें यूरेनियम एलिमेंट यूज़ होता है, यूरेनियम का आइसोटोप 235 which is used here. It is a radioactive material. उसमें फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, वो कंटिन्यूस चेन रिएक्शंस में करता रहता है. तो वहाँ क्या चेन रिएक्शंस वो हीट लिबरेट करेंगे. तो हीट लिबरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ वाटर सप्लाई है, वाटर एब्जॉर्ब द हीट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, द हाई प्रेशर स्टीम. तो रेड पाइप से यहाँ के वो टर्बाइन पर तरफ जाएगा. वो टर्बाइन स्टार्ट रोटेट होना चालू करेंगे. टर्बाइन आर कनेक्टेड टू generators है. Generator also rotate and we get the continuous flow of electricity. Is it similar to the one which is producing the hydroelectric? Yeah, this main concept is rotating the turbine. आप कैसे भी रोटेट करो, वो स्टीम से करो, वो पानी से करो, वो हवा से भी करो. सेम है वो सब सेम है. जनरेटर तुम नाइन्थ में पढ़े, ये फ्यूजन रिएक्शन तुमने पढ़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, तो सेम है सब. So different tasks होते हैं, like हम लोग जितना स्कोर करेंगे हाइट करेंगे, so इसमें जितना पिक एंड ड्रॉप करेंगे, like ड्रॉप करेंगे जितने इसमें हमारा पॉइंट्स बढ़ेंगे. So जितने पॉइंट बढ़ेंगे आपको मैच भी करेंगे. like गेम है, so गेम अभी खेलना है. How long have you been working out here? So like this is a startup. So the company has been there for a year and I have been working for like 6 months. पूरा different. Best of luck with your work. Thank you. And best of luck to the students. Yeah. Thank you. Okay, so this is for the middle, like totally जो रहता है वो सब कुछ है. So ये जो थीम है, हर साल अलग अलग थीम्स रहते हैं, जो थीम्स के थ्रू हम लोग ये रोबोट बनाते हैं. लाइक इस बार का थीम था पिक एंड ड्रॉप. सो उसके ऊपर से हमारा ये रोबोट है पूरा. तो हमारे ऑलरेडी 2 वर्जन हो चुके हैं और ये हमारा 3rd वर्जन है, क्योंकि 2 वर्जन में इतने इसलिए हम लोग ये थोड़ा अपग्रेड किया, ये अपग्रेड. सो हाँ, और हम लोग लाइक हमारे डिफरेंट मैचेस होते हैं, मतलब प्रैक्टिस मैचेस, क्योंकि ये कंपटीशन होने वाला है पुणे में नेक्स्ट मंथ में.
सो अभी वो नेशनल चैम्पियनशिप होने वाला है उधर. देन कोई जीतता है उधर तो वो जाएगा USA फॉर द इंटरनेशनल. सो वी आर प्रैक्टिसिंग मच मोर. तो हम लोग उधर कर रहे हैं TIS में कर रहे थे इनोवेशन स्टोरी जो दादर में है. सो एक्चुअली इनोवेशन स्टोरी हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं बहुत सारे कि आप लोग पार्टिसिपेट करो ऐसे ऐसे चैलेंजेस में, क्योंकि ये एक चैलेंज नहीं रहता उधर. एक्चुअली फर्स्ट चैलेंज रोबोटिक्स चैलेंज FRC, FGC, FTC, FLL ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन रहते हैं. वी हैव टू पार्टिसिपेट. सो हम लोग अभी FTC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और टोटली जो जीरो से एंड तक नॉलेज रहता है रोबोटिक्स का, जो हम लोग हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं सर रोबोटिक्स के थ्रू. तो स्टार्टिंग से एंड तक हमें बेसिक्स टोटली सीखने को मिलता है थ्रू द TIS. सो आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी आ सकते हो, TIS को विजिट कर सकते हो. लाइक You can check out our website. You can leave your email. We'll reach out to you. तुम्हाला हा माझा एक्झिबिशनचा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय सर्वांना.